हम लोग देखने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चेस गेम प्ले जो कि हुआ है दो इंडियन ग्रैंड मास्टर्स के बीच में, जिनमें से एक है हमारे अरविंद चिदम्बरम और जो दूसरे हैं वो है हमारे अर्जुन एरिगेसी। सो देखते हैं कैसा उनका गेम प्ले रहा, कौन जीता। लेट्स सी। सो यहाँ पे अरविंद खेलते हैं व्हाइट के साथ और अर्जुन खेलते हैं ब्लैक के साथ। सो अरविंद स्टार्ट करते हैं गेम को बाय प्लेसिंग हिज पॉन टू D4, जो कि है क्वींस पॉन ओपनिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ओपनिंग है चेस में। ये मेनली हेल्प करती है सेंटर को कंट्रोल करने में और पीसेस को डेवलप करने में। इसके रिप्लाई में अर्जुन किंग्स इंडियन डिफेंस को यूज करते हैं और अपने नाइट को F6 पे प्लेस करते हैं। देन वाइट pushes D5, then pawn to D5, then pawn to E3, then G6, then knight captures D2. Now bishop is placed to G7. After that, white develops the knight to F3 to continue normal development, so that the knight supports the center and can later help with the king side attack or central break. Then black castles early, which is a typical plan in king's Indian defense. Then bishop to E2, then pawn to C5, pawn C3, B6. यहाँ पे को फिर white castle करता है to bring the safety to the king and preparing to bring the rooks into the game. Then black develops the bishop to B7 so as to place pressure on the E4 and D4 pawns. Here you can see the bishop on the long diagonal also supports potential breaks with E5. After that, you can see that white expands on the queen side with B4. This move also supports the C5 pawn, preventing black from achieving an immediate counter attack with C5. After that, you can see that black develops the knight to D7, white exchanges pawn on C5, then queen to B3, black develops queen to C8, then pawn to A4, H6, rook to B1, bishop to C6. Then यहाँ पे बिशप टू F4, अरविंद बिशप को पीछे ले आते हैं। Then pawn to G5, then bishop to E5, pawn to C4. Here white plays E5, a key move to target the black's knight on F6 and centralizes the bishop. Here you can see the bishop on E5 is now very well placed, which is exerting pressure on black's king side and central pawns. Here black responds with C4, pushing a pawn to displace white's B3 pawn. Here white responds with queen A3, targeting the black's queen side pawn, particularly that C4 pawn. After that, black plays RE8, which is a common King's Indian move to prepare a potential attack with the E5 pawn break. White responds with H3 to keep the king side secure by preventing any black knight or piece from occupying the G4 square. Black retreats the bishop to F8. Then white plays queen A2. Here you can see white is now doubling down the pressure on the queen side. Then black pushes G4. Here you can see that G4 push is also limiting white's option for creating counter attack. White retreats the bishop to G3, black places the bishop on G7. White plays rook E1, centralizing the rook and adding pressure to the E7 pawn. Now white is also preparing for a potential E4, E5 push or targeting the black's weak queen side. Now you can see black plays knight F8, retreating the knight and repositioning it to a more defensive square. Black captures knight at H2.
Bishop captures knight at h2, and pawn to e5. Pawn captures white captures pawn at d5. Then bishop to e5. Then bishop captures pawn to e5. Then white captures bishop to e5. Rook to e5. Rook captures bishop to e5. White plays knight f3. Black responds with re6. White places the rook on d1. Black develops the bishop to b7. White responds with d4. Knight d4. Black plays rook g6. White plays bishop h5. Black responds with rook g5. Here you can see white centralizes the queen with e2 to support d2 knight. Black plays queen to d7. Pawn to f4, rook to g7, queen to c2, knight to e6, knight to f5. Arjun defended his rook by placing it at h7. Then pawn to e4, knight captures pawn at f4, pawn captures d5, white pawn captures d5. Then f6, then bishop to g4, queen to d8, rook to d4, knight to d3, threatening to capture the rook at e1. White plays rook to f1, knight e5, bishop to h3, king to h8, pawn to d6. Then Arjun plays queen to g8, rook to f4, queen to g5, knight to e7, rook to g7. Then Aravindh placed rook to f6, capturing the pawn. Then rook to g8. So यहाँ पे एक तरीके से अर्जुन के लिए बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन हो गई थी, जहाँ से विन कर पाना उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था. देन अर्जुन ने एक अच्छा मूव बढ़ा, उन्होंने क्वीन के थ्रू चेक दिया, लेकिन अरविंद ने डिफेंस में अब क्वीन को f2 पे प्लेस करा. नाउ अगर आप देख रहे हैं इस गेम में, तो अर्जुन अगर कैप्चर करते हैं क्वीन को, फिर भी अर्जुन के लिए बहुत टफ सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे को अरविंद की क्वीन बन रही है, अरविंद की क्वीन डेवलप हो रही है. और यहाँ पे अगर क्वीन डेवलप होती है तो फिर बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अर्जुन इस टाइम पे इजीली चेकमेट उनको मिल सकती है. सो व्हाट अर्जुन डिड, ही रिजाइंड. सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेम था, बहुत बढ़िया गेम था. सो थ्रू आउट द गेम जो थे वाइट पीसेस बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, स्पेशली जो रूक्स और नाइट थे वाइट के. पर अगर बात करें ब्लैक की, तो वो इतना ज़्यादा गेम में आ नहीं पाए. वाइट के पास बहुत ज़्यादा स्पेस, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन था, जिसकी वजह से वो एक अच्छा किंग साइड और क्वीन साइड अटैक वो दे पाए. ब्लैक की अगर बात करें, जो g5 और g4 पुश था ब्लैक की साइड में, वो उसने एक लॉन्ग टर्म वीकनेस क्रिएट करी. फाइनली अरविंद ने गेम जीत लिया, अर्जुन ने रिजाइन कर दिया. पर ओवरऑल इट वॉज क्वाइट अ गुड गेम प्लेड बिटवीन अरविंद और अर्जुन.